of the parameters 6 and 5. That is, if its length and breadth are 6 and 5 meter, now we are going to find the perimeter or area of this triangle by dividing it into two triangles. Okay, so Tastima, wait, I have not taken the attendance, I will be taking after some time. Okay, so now if we divide this into two triangles. Okay, you will find that the area of this rectangle will be equal to the area of these two triangles. Okay, so you can see from here that this rectangle is divided into two equal triangles. Okay, now you can find the area of these two triangles. Formula you all know, that is area of triangle 1 will be equal to what? So as it is a rectangle, so this side also will be 5 meter and this will be 6 meter. Okay, so area of triangle will be half into base into altitude into height. You know? So this is your height. So it is equal to what? 15. Same way, area of second triangle is also equal to 15 meter. Okay. So now you can find the area of rectangle. The area of rectangle is equal to area of first triangle plus second triangle. Okay, so that is equal to 15 plus 15 is equal to 30 meter. And on the other way, if you will find the area of this rectangle by using our formula of area, that is area of rectangle is equal to length into breadth. So area of rectangle is equal to length into breadth. Okay, so that is again equal to 30 meter, isn't it? So you can see that yes, 30 meter square. Okay, girls, thank you. है ना? तो आपने देखा कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, है ना, सम ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एक अपने यू कैन डू दिस yourself at home also. You take a paper, piece of paper, okay, then cut it in the form of a rectangle. You can take the same measure or a little big also. You can take. Then in between you make it diagonal like this and then fold it and cut it. Okay? You will find that you can superimpose both the triangles and both the triangles will be having the same area. आप उसको किसी भी तरह से एक दूसरे पर रख सकते हैं and you will find that both are having the same area. Okay? Is it clear? So, same way, in your textbook you are given some other things. Same way you can also find the area of a parallelogram in two ways. Okay? So let us take the parallelogram. Area of a parallelogram. Okay. So now let us take a parallelogram like this.
Okay. Now you see, just wait. Just a minute, some problem is there. Ma'am, your voice is not coming. My voice is not coming. Ma'am, you are partially audible. नहीं आ रही? Ma'am, Ma'am, you your are voice. audible. Ma'am, you're audible. No, I'm Ma'am, audible. no They are problem wasting with time. audio. so whoever is sending this thing, please check your own connection, beta. Okay? Just wait for a minute. Okay. Just wait, I cannot see the board actually. You can all see me now? All of you? Ma'am, we can see you and audible also. Acha, here also. Ma'am, Yes, we can see ma'am. you and you are properly audible. चलो अभी देखती हूँ मैं. So, now you can see here, see this is a parallelogram. Okay. Now you see here it is like a triangle. ये दिख रहा है आप लोगों को? It is like a triangle. If I cut this triangle, if I cut this triangle from this side and paste it on this side. Okay, देखो. इधर से मैंने उसे निकाल दिया. Okay. And from here I have cut this triangle and pasted on this side. So you will finally find that it is like a what? Rectangle. Rectangle. So it will become Rectangle. a rectangle. Okay. Okay, so now can you find the area of this parallelogram? Yes, ma'am. Very easy. Okay, very easy. Yes, ma'am. So you can find the area of this parallelogram by using what formula? Ma'am, the parallelogram divides into two congruent triangles. We can also find this by Pythagoras theorem. अभी तो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी बेटा. Ma'am, height into base. Just of your Base level. into height. The formula is Base into height. हाँ, length into breadth ये जो आप यूज कर रहे हैं, है ना? Base Perpendicular. into base into altitude is the formula We to have to find the find area of the a parallelogram. parallelogram area by the ये दिख रहा है? perpendicular falls on it, and then we have to multiply it base into height. Okay, okay. So I think this is clear to you all. ma'am. Diagonals of a parallelogram bisect each other at 90 degree.
यस बेटा, हाँ ये तो हमने पढ़ा है ना, शायद हमारे पॉलीगन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, है ना? मैम Okay, so this I think is clear to all of you that if you are asked to find the area of any parallelogram, you can directly multiply like your rectangle, that is length into breadth. आप directly length into breadth multiply करके area of parallelogram निकाल सकते हैं ना? शायद ये अभी तक आपके कोर्स में नहीं आया होगा. That is how to find the area of a parallelogram. So now practically we have seen that it is just as same as your rectangle. So directly by multiplying length and breadth, you can get the area of this parallelogram. Okay. Now one more method is given to you. In your textbook, you can see on page number 210. Page number 210. See if you will draw this parallelogram on a graph paper. Okay? Then, if you want to find the area of this parallelogram, see, don't chat amongst yourself. पहले पढ़ाई कर लो. Attendance is not very important. पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. You only are worried about this attendance is taken or not. Okay. So now this is a parallelogram and you want to find its area and perimeter. Okay. So perimeter you can find by counting the number of squares in the side, because here each square is assumed to be of measure 1 unit. Okay. So if you want to find its perimeter, you can just start from here, count the number of squares from all the four sides, and you will get the perimeter. Okay. So perimeter of this parallelogram you can find. I think this was there in your class 6th also. That is finding the area and perimeter using this squares. Was it there? Okay. So now if you want to find the area, you can find the area by counting the total number of squares inside this parallelogram, which will give you area. Area आपको पता है ये area क्या है? वो space occupied जितनी रहती है, that gives you area, है ना? और perimeter क्या होता है? Boundaries पे होता है. So by counting these squares on the four sides, on the boundaries will give you the perimeter of this, and area you will get by counting the total number of squares inside this parallelogram. Okay, clear? So today what we will do? Ma'am, I have a doubt. हाँ बेटा बोलो. Ma'am, can I share my screen? वो तो ऑप्शन हम ऑफ करके रखते हैं ना. You cannot share बेटा. Okay, ma'am. ऐसे ही पूछ लो बेटा. No, ma'am, it is a question. Ma'am, you can see my image. Ma'am, there is a question in a book. हाँ बोलो पेज नंबर. On which page number? Page number बोलो बेटा. कहाँ गायब हो गए? कौन पूछ रहा था? एकांश मैम एकांश पूछ रहा था। फिर गायब हो गया? मैम लगता है नेट को प्रॉब्लम होगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. नेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है ना आजकल, यही तो प्रॉब्लम है. ओके, सो this method is clear to you all by counting the number of squares, finding the area of a parallelogram or perimeter, or area and perimeter of any other figure also you can find. ये एक्सरसाइज तो वैसे भी बहुत इजी है, हमें फटाफट स्टार्ट करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is area of a triangle. ठीक है.
बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक एक बार मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट इसमें लिखवा देती हूँ पैरेललोग्राम में. यू ऑल कैन सी ऑन पेज नंबर 212. भाग्यराज, Yes, ma'am. बेटा पेज नंबर 212 पे टॉप में क्या दिख रहा है आपको? You can see here 4 parallelograms. दिख रही है सबको? Yes, ma'am. ma'am. है ना? So you will find that in all these 4 parallelograms, the parameters तो same है उनके लेंथ और ब्रेड्थ, है ना? लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर और एक और साइड का जो मेजर है वो 5 सेंटीमीटर है ना? So you will find that all the parallelograms are with the same parameters, but what about their area? पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा इनका, है ना? तो एरिया डिफरेंट है क्या इनका? एरिया डिफरेंट है या नहीं है? भाग्यराज, Yes, है ma'am. ना? टिया ने आंसर दिया है. So see, same way you will find that parameters may have different. देखो सेम पैरामीटर जैसे ये ड्रॉ कर लिया. अब यही पैरामीटर मैं ले लेती हूँ बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा पैराग्राफ बना देते हैं, है ना? इधर तो नहीं बन पा रहा है, थोड़ा छोटा ही लग रहा है. यू विल फाइंड दैट द एरिया विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन हाइट. ये हाइट लेते हैं ना हम लोग एरिया के लिए, तो पेरीमीटर विल बी सेम, सम ऑफ बाउंड्रीज विल बी सेम, बट समटाइम्स द पैरेललोग्राम मे बी एक्सपैंडेड थोड़ा सा, समटाइम्स इट मे बी सप्रेस्ड रहेगा थोड़ा सा, है ना? तो यू विल फाइंड दैट द area will be different even if the perimeter is same. Okay, so some figures are given in your textbook on page number 212. पेज नंबर 212 पे आप देख सकते हैं, है ना? दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These 4 Yes, ma'am. with the सेम पैरामीटर बट डिफरेंट एरिया, है ना? क्योंकि उनकी हाइट में डिफरेंस आ जाएगा. अगर एक में ऐसा आपको इस तरह का पैरेललोग्राम है तो हाइट ज्यादा रहेगी, एक में अगर ऐसा वाला पैरेललोग्राम है तो हाइट विल बी लेसर, है ना? सो एंड द फार्मूला यू नो इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ओके, सो हाइट यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, इधर से ले सकते हैं, और बेस आपको पता ही है ना? सो हाइट मे बी अबाउट 2 साइड्स, वो कहीं से भी दे सकता है आपको, है ना? तो कभी आपको अगर बेस इसे मान लिया है तो हाइट कैसे दे देगी? हाइट अबाउट दिस ऐसे देगी, है ना? सो दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ कि हाइट और बेस कौन से साइड के अबाउट आपको दिया है. ओके, सो नाउ सी ऑन पेज नंबर 212, try these of this page. That is, find the area of the following parallelograms. ठीक है? So first is the base is 8 centimeter and height is 3.5 centimeter. So what will be the area of this? Ashirvad? Yes, ma'am. What will be the area for this beta? 8 into 3.5, isn't it? No answer. Okay, I can see few answers in the chat. 8 centimeters square. Base into height, that is 8 into 3.5 centimeter, है ना? Same way, in second part also you are given the measure of base. पूर्वी I am on page 212, है ना? 212 से बता रही हूँ बेटा मैं आपको, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं ना. Okay, so second part also you can see that there is a parallelogram with a measure of base equal to 8 centimeter and height is equal to
2.5 centimeter. Okay. So in this also you can find its area by multiplying 8 into. 20 centimeters square. Yes, beta. 20 centimeters square. हाँ बेटा. Okay. So is it clear? अच्छा, एक फ्राइडे जो आपका नेक्स्ट वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ. See on the same page you have second part, that is let us suppose that this is the parallelogram. ये parallelogram है, ठीक है? So let the name be A B C D. Okay. So A B C and D. And the measure of AB is given to you, that is 7.2 centimeters and perpendicular from C on AB. Perpendicular from C on AB, ये किधर से आ रहा है आपका? या हो सकता है मैंने ऐसा वाला पैराग्राम दिया होगा तो अंदर ही दिख जाएगा आपको perpendicular. So it is of length 4.5 centimeters. ऐसे नहीं कंफ्यूज होना कि इसका परपेंडिकुलर जो है वो बाहर निकल गया है ना, ठीक है? क्योंकि या तो हम इसको ऐसे ले लेते Ma'am, तो ये ऐसा रहेगा, सी से ए बी पर, ये सी है ना, और ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है ना. अगर ये ऐसा रहेगा, so this will be your perpendicular and this will be your base. ठीक है? From C to AB, this is your perpendicular. So area of this parallelogram will be base into height. That is 7.2. which is equal to 32.4 centimeters square. Okay, very good. शाबाश. तो अब पहले एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं आप लोगों की, ठीक है? Then we will continue with the last topic, that is area of triangle. ठीक है? Okay, so 7th A, roll number 1, Astha. Present, ma'am. Aditi. Ananya Bhakar. Present, ma'am. Angana. Present, ma'am. Angana present. Okay, beta. Itigiri. Present, ma'am. Achha, before that Divya is also there. Is Divya there? No. Hansika. Present, ma'am. Hetal. Present, ma'am. Himanshi. Present, ma'am. Ishani. Present, ma'am. Kirti. Present, ma'am. Prakriti. Ma'am, Kirti Yadav is present. हाँ ओके बेटा, लगा दे कीर्ति. प्रियंका. रश्मि. रुचि. Present, ma'am. शगुन. शिवरंजनी. तस्लीमा. Present, ma'am. वर्षा. आदित्य सिंह. आदित्य कुमार. Present, ma'am. Then Aditya Singh, second wala. Present, ma'am. Okay. Arnav. Present, ma'am. Aryavardhan. Present, ma'am. Astitwa. Present, ma'am. Darsh. Present, ma'am. Ekansh. Kanch Mangal present, ma'am.
Kaustubh, Kaustubh Singh present, ma'am. Lakshya, Present, ma'am. Megant, Present, ma'am. Ishant, Piyush Ahir, Present, ma'am. Piyush Thakur, Piyush Sharma, Present, ma'am. Praneem, Prithviraj, Present, ma'am. Rajvansh, Saurish, Present, ma'am. Vishal. Present, ma'am. Okay, that's all for 7th A. Now 7th B, Anshika, Anushka, Bhumika, Deepshri, Gauri, Khushi, Meera, Present, ma'am. Nitika, Palak, Purvi, Present, ma'am. Purvi Vadwa, Present. Sanskriti, Present, ma'am. Shimaila, Present, ma'am. Sonakshi, Present, ma'am. Suruchi, Priya, Present, ma'am. Yashwini. Yashwini is present. Ajmeer, Present, ma'am. Ashirwad, Bhagyaraj. Present, ma'am. Ma'am, Ashirwad is present. Okay, Ma'am, beta. Bhagyaraj Hada is present. Sharma is Bhaskar. present. Yes, Ma'am, I- Palak Sharma is present. Ma'am, Palak Sharma is present. Okay, beta. Ma'am, Purvi Jain is present. मुझे लगा दिया बेटा. भास्कर, Present, ma'am. दिव्यांश, हिमांशु, गिरीश, लक्ष्य शर्मा, Present, ma'am. माही, Present, ma'am. निकोलस, राघव, रजत, समन्यु, विधान. Present, ma'am. Okay. So let us continue with our मैम topic. आपने मेरी प्रेजेंट लगाई थी क्या? हाँ माही लगा दी बेटा. Now our last topic is area of a triangle. Okay. Right, next topic. Area of a triangle. ठीक है? So how to find the area of any triangle? See, some activities are given in your textbook. आपको activities कर सकते हैं. All of you see on page number 213. So, draw a scaling triangle on a piece of paper. ठीक है? Scaling triangle पता है आप लोगों को? Scaling triangle कौन से होते हैं? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं या एक भी इक्वल नहीं होता? Yes, इक्वल नहीं होता. जिसका इक्वल नहीं होता. The measure of all the sides is not equal. एक भी साइड इक्वल नहीं होती. yes.
So जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं, all sides are of different measure, है ना? तो today you draw a scaling triangle on a piece of paper, ठीक है? Cut out the triangle, ठीक है? Now place the triangle on another piece of paper and cut out another triangle of the same size, ठीक है? एक और आप स्केलिंग ट्रायंगल सेम मेजर का कट करेंगे. So now you have scaling triangle of two triangles of the same size. So are both the triangles congruent? दोनों congruent होंगे क्या? Congruency तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? तो congruent होंगे क्या? So when you will superimpose both the triangles, that is one on the other, you will find that ये totally superimpose हो जाएंगे, है ना? क्योंकि उनके मेजर भी तो सेम ही थे, ठीक है? अब क्या बोला इन्होंने? Now place both the triangles such that their corresponding sides are joined. देखो ऐसे. All of you see this? Can you see these two scaling triangles of the same measure? दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. अब हम क्या करते हैं? उन दोनों triangles को we will put one with the other in such a way that they are forming what? देखो क्या बना लिया? Rectangle. है ना? तो उससे क्या हो रहा है? अब you will find that is the figure that is formed a parallelogram, है ना? Compare the area of each triangle to the area of parallelogram. अब आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे दोनों ट्रायंगल्स का एरिया. आज आप एक वक्त करके देखेंगे, है ना? एक स्केलिंग ट्रायंगल बना लो एक पीस ऑफ पेपर पे, उसको कट करो, देन पुट दैट जो आपने कट किया स्केलिंग ट्रायंगल उसको एक और पेपर पे रख के सेम साइज का एक और स्केलिंग ट्रायंगल आप कट करेंगे, ठीक है? फिर देन एक दूसरे को इस तरह से रखेंगे दैट यू विल गेट ए parallelogram. Okay, now you find the area of parallelogram using the formula and then finding the area of this by adding the areas of these two triangles. ठीक है? तो आज करेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है? So you will find that the sum of the areas of both the triangles is equal to the area of parallelograms. ठीक है? So आपका area of parallelogram क्या होता है? Base into height. Okay. So what will be the area of triangle then? है ना? So आपने देखा Half into base into height. half into base into height. इस तरह से हमने देखा था कि ये दो ट्रायंगल्स अगर हमने लिए और इस ट्रायंगल का ये जो साइड था इधर से सुपर इम्पोज करा, so you will get a parallelogram like this. Then you will find that the area of this parallelogram is what? Area of parallelogram is equal to base into height. Okay. Yes, ma'am. Then what will be the area of each triangle? Each triangle क्या है? इसके half of it है ना? So Half into base into height. yes, very good. So area of triangle will be equal to half of this area, which is half into base into height altitude. बोल सकते हैं हम इसको half into base into altitude. Okay. So in this way you can find the area of any triangle. और अगर आपको पैरेललोग्राम का निकालना है तो वो भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना? half into base into height से, ठीक है? Now come to the last figure of this page, है ना? एक और last figure आपको दिया है, देखो ऐसे कुछ आपको on the same base पे कुछ triangles draw करना है, ऐसे draw करेगा, फिर ऐसे draw करेगा, okay? Then some other triangle like this. So on the same base, many triangles are drawn. So can you say that all the triangles are equal in area?
बताएंगे आप मुझे? देखो इन्होंने क्या दिया है कि ऑल द ट्राइंगल्स हैव द सेम बेस 6 सेंटीमीटर, है ना? इसका बेस सेम है, वैसे थोड़ा सा मेरे में क्या अलग हो गया नहीं है, एंड हाइट आल्सो वी विल फाइंड दैट सबकी हाइट भी सेम है ना? सो व्हाट विल बी द एरिया? अगर मैंने हाइट इसका 7 ले लिया, so area of each triangle will be what? 21 centimeter square. 7 लिया है ना मैंने, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिया आपने, है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2. दिख रहा है ना? 7. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू 6 इंटू 7. So that is equal to 21 centimeter square. ठीक है? So what about their perimeters? Perimeters भी सेम होंगे और या फिर congruent होंगे क्या? आपको एक जैसे लग रहे हैं कि सारे triangles? मैम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगा सकते हैं क्या बेटा? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? आई कैन नॉट सी द नेम. कौन पूछ रहा था बेटा? पृथ्वीराज पृथ्वी. पृथ्वी, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगा सकते हैं क्या बेटा? इज इट एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स या कुछ ट्रायंगल्स पे ही लगा सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट No, ma'am, it's ट्रायंगल। only applicable in right angle triangle. यस, आई थिंक दिस इज भाग्यराज. गुड बेटा, इसलिए अभी आपके कोर्स में नहीं आया ना, सो अभी हम इस बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपको पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि व्हेन टू यूज दिस थ्योरम. यू कैन नॉट यूज दिस थ्योरम एवरीवेयर, है ना? आपने हायर क्लासेस में कहीं पढ़ लिया होगा, है ना? बट नाउ यू कैन नॉट यूज इट एवरीवेयर. जब आप उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तभी आप उसे यूज कर पाएंगे. ओके, इज इट क्लियर पृथ्वी? So here you cannot use, you can only find the perimeter by either by counting the squares, है ना? जो आपको अभी मैंने मेथड बताया था, ग्राफ पे ड्रॉ करके आप निकाल सकते हैं. ठीक है? And you will find here that these triangles are actually not congruent also, even if their area is same, है ना? Area of all these triangles are same, isn't it? But they are not congruent. तो आप एक और ये नोट करके लिख लेंगे कि ऑल द जो भी congruent triangles होते हैं उनका एरिया तो सेम होगा. देखो मान लो मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स congruent बना है, जिनकी साइड्स वगैरह सब कुछ एकदम सेम है ना? तो अगर सेम ट्रायंगल बनाए हुए दोनों congruent है तो उनका एरिया सेम होगा. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर उनका एरिया सेम है तो वो congruent भी हो. ठीक है? सो मेक ए नोट ऑफ दिस. एक नोट करके लिख देना. और congruent triangles have the same area. Is it correct or not? But it is not necessary that triangles having equal area are congruent also. ठीक है? Triangles having equal area are congruent. ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका एरिया इक्वल हो तो congruent भी हो. ठीक है? So I think आपको तीनों फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे. दैट इज हमने आज क्या क्या निकाला? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, रेक्टेंगल निकाला, है ना? एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला. ठीक है? सो तीनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे
On the basis of these three formulas, now we will see few examples so that tomorrow we will start our exercise. है ना, कल exercise complete कर लेंगे. So now see on page number 214, example number 6. One of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the area of parallelogram. ठीक है? देखो. We will discuss few examples and tomorrow we will complete this exercise. कल क्लास नहीं होगी तो मैं ले लूँगी, है ना? So that at least this topic is completed. So one of the sides and corresponding height of a parallelogram. So example number 6. Okay. So one side is given to you. It is 4 centimeter. Okay. And also the height is given to you. That is 3 centimeter. ठीक है? ये दे रखा है आपको 3 centimeter और ये दे रखा है आपको 4 centimeter. So what will be the area of this parallelogram? Base into 12 centimeter square. हाँ 12 centimeter square. 12 centimeter square. Okay. So you all can do this. Then example 7 is also just similar to this. Find the height x if area of parallelogram is given to you. है ना? Area of parallelogram is what? Area is given to you. It is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter. Base आपको दे रखा है 4 centimeter. Then what is its height? So you know the formula, area is equal to base into height. So height will be equal to area divided by base. So it is 24 divided by 4, that is equal to 6 centimeter. Okay? Any doubt in this? I think all these questions are directly formula based. Now next example is also like this. The two sides of a parallelogram are 6 centimeter and 4 centimeter. The height corresponding to the base CD. Yes, this I wanted to discuss with you. कि करस्पॉन्डिंग टू बेस आपको हाइट देके रखी होगी, है ना? देखो. So you have a parallelogram ABCD, okay? A, B, C, and the two sides of a parallelogram are 6 centimeter and 4 centimeter. So this is 6 centimeter and this is 4 centimeter. Okay. The height corresponding to base CD is 3 centimeter. Height corresponding to base CD. इस base CD से corresponding जो height है वो है how much it is? 3 centimeter. Then find the area of parallelogram. So area of parallelogram will be 6 into 3, that is 18. ठीक है? Now again find the height corresponding to base AD. Height corresponding to base AD. AD is this one. Height corresponding to this will be what? ऐसे चलेगा, है ना? तो ये आप निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा इस पैरेललोग्राम का, है ना? आप कहीं से भी उसकी हाइट ले लें तो एरिया विल बी सेम. सो इफ यू टेक हाइट ऑफ दिस साइड, उसका मतलब बेस ये रहेगा हमारा. सो बेस विल बी 4 सेंटीमीटर इनटू हाइट 4.5. हाँ यस बेटा 4.5 centimeter square. ओके ओके. हाँ The height corresponding to base AD is equal to 4.5 centimeter. अच्छा ठीक है ना? तो अब आपके पास में क्या है, एरिया तो सेम ही है ना? कुछ बच्चों ने निकाल लिया है, मैं अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देती हूँ. बिकॉज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी सेम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकाला है, तो आपने हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 18 निकाला था, है ना? Isn't it? तो वो हमारे पास में 18 है, तो हाइट
about this will be 18 upon 4. So it is equal to 4.5. So height of this जो आपके यहाँ से यहाँ तक perpendicular गया है उसकी height होगी 4.5 centimeter. So you have used the concept that area of parallelogram will be same. ठीक है? Then example 9 is finding the area of triangles. Area of triangle आपको पता ही है half into base into altitude. ठीक है? So directly you can find. Then example number 10 is find BC if the area of triangle is 36 centimeters square. Question example 10 में आपको क्या दिया है? You have a triangle like this, A, B, C. Okay, and you are given this height is equal to 3 centimeter and area is 36 centimeters square. Area is 36 centimeters square. So area will be equal to half into base into height. And you are given height. So base will be equal to twice of A 48 centimeters square. H. Okay, very good. So it is equal to 2 into 36 divided by 3. Okay? Is it clear? So in this way, you have to check whatever is given to you and then what is asked to you. So if this concept is clear in your mind, you can easily find. Ma'am, Yes, beta? please mark my attendance. Yes, beta? Please mark my attendance. This is who is speaking? Shagun Srivastava. Huh? Shagun Srivastava. Shagun. I have to check. Okay, others can leave. I think that's all for today. Tomorrow we will continue. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.